वेलकम बैक गाइस। आज हम लाए हैं एक कम्प्लीटली न्यू कराटे किड यूनिवर्स, द कराटे किड 2 लेजेंड्स। ये स्टोरी डैनियल लारूसो के लाइफ का वो चैप्टर है जहां वो स्टूडेंट से लेकर लेजेंड बनने वाला है। सो सिट बैक, रिलैक्स, ग्रैब योर पॉपकॉर्न बिकॉज गाइस ये स्टोरी इमोशंस एक्शन का पूरा मास्टर क्लास कराटे से फुल पैक्ड है। और लेट्स बिगिन। Movie picks up 1 year after the All Valley Karate Tournament. Daniel LaRusso अब थोड़ा कॉन्फिडेंट, थोड़ा मैच्योर हो चुका है। मिस्टर मियागी के साथ डेली ट्रेनिंग चालू है। बैलेंस, डिसिप्लिन, पीस ऑफ माइंड। लेकिन गाइज पीस डजंट लास्ट लॉन्ग। कब लास्टिंग होती है मूवीज़ में। जॉन क्रीज कोबरा काई के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है। His students left him, dojo almost banned, लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं। He finds someone dangerous, a mysterious karate grandmaster known as Sensei Kaito, a fighter whispered about as the shadow of Okinawa. काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज करता है। क्रीज मेक्स अ डील विद हिम, help me rebuild Cobra Kai and together we will crush Miyagi and his boy. And guys, यहीं से शुरू होती है real trouble. Brace yourselves. One calm evening, Daniel and Miyagi garden में काम कर रहे होते हैं. Suddenly, a letter arrives from Okinawa. Letter written by a monk named Master Tanji. Miyagi का पुराना दोस्त होता है। तांजी उसको वार्न करता है, Kaito has returned. He seeks the ancient scrolls, the Miyagi secrets of light and shadows. Daniel confused होता है। Miyagi explains कि centuries पहले उनके ancestors ने कराटे के 2 secret styles बनाए थे। Light style for defense, balance, harmony. Shadow style for aggression, speed and destruction. Kaito belongs to the dark lineage. And now he wants to master both styles. Daniel says, so what do we do? Miyagi replies, we go to Okinawa. And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa, a place filled with memories, honor and old traditions. Here they meet Master Tanji, an elderly monk with a sharp mind. Tanji tells them Kaito has already stolen parts of the ancient scroll. Only one scroll remains protected, the scroll of light, which contains the ultimate defensive techniques called the breath of the mountain. But Kaito will come for it. Daniel learns that Kaito के साथ 3 elite fighters भी हैं, known as the Black Wind Trio. Each an undefeated expert in pressure point combat, shadow movement, weaponized karate. Basically guys, ये लोग DLC level bosses हैं। डेनियल को tough time देने वाले हैं। Daniel's training enters a new level. Miyagi says to defeat shadow you must master light. Training scene, balance of the wind. Daniel at cliff पर खड़ा होता है heavy winds के बीच में। He learns to feel the opponent's movement without seeing him. The breath of the mountain, slow breathing techniques to store energy and redirect force. Combat with blindfold. Daniel blindfold, sensing footsteps through vibration in the ground. On strike discipline is Miyagi teaches the ultimate defensive counter. Use opponent's full attack against himself. Guys, ये ट्रेनिंग montage is pure cinema. Goosebumps guaranteed. एक रात मॉन्स्टेरी पर सडन अटैक होता है। काइतो एंड द ब्लैक विंड ट्रायो अराइव। अ मैसिव फाइट ब्रेक्स आउट, मियागी वर्सेस काइतो, डेनियल वर्सेस 2 members of the trio. Tanji protects the scroll. Daniel manages to defeat one of the fighters but gets injured. Miyagi and Kaito's duel is intense. Kaito uses speed so fast he looks like he is disappearing. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. Suddenly, Kaito throws sand in Miyagi's eyes. Dirty move. Daniel yells, Miyagi, I am coming.
but Tanji stops him. This is Miyagi's fight. Kaito escapes with 2 scroll pieces. He says the boy will face me in 3 days at the Island of Shadows. Daniel, injured but determined, trains harder. He tells Miyagi, I am not ready. Miyagi replies, no one is ready for life. They become ready by choosing to stand. This line deserves an Oscar, guys. Pure wisdom. Miyagi teaches Daniel the final technique, a meditation stance that bursts into a fast, accurate counterattack using minimal movement. Daniel gains clarity. Karate is not about winning, it is about protecting what matters. It is about bringing balance. Daniel, Miyagi, and Tanji reach the mysterious island, foggy, quite ancient. They see Cobra Kai banners everywhere. Kreese laughing, Kaito waiting on a stone platform. Kaito says, LaRusso, your master can't protect you now, face me. And guys, get ready, this is the craziest fight of the movie. Before reaching Kaito, Daniel must defeat the remaining trio members. First fighter uses pressure points. Daniel counters with Breath of the Mountain. Second uses rapid shadow strikes. Daniel defeats him blindfolded, sensing vibrations. Crowd, Cobra Kai students stunned. Now comes the final duel. Fog rolls in, silence everywhere. Daniel and Kaito face each other. Kaito attacks with lightning fast punches, all offensive, zero restraint. Daniel defends calmly using Miyagi's light techniques. Daniel gets hit hard a few times, he falls to knees, and Kreese laughs, finish him Kaito. But Daniel remembers Miyagi's word, stand, even when standing seems impossible. He breathes deeply, breath of the mountain activated. Kaito attacks again. This time Daniel redirects his force perfectly. Kaito stumbles. Daniel shifts into the light within stance, and with one clean counter strike, a palm to the chest, he sends Kaito crashing to the ground. And silence. Guys, this movie is insane. ये मूवी सब में बहुत अच्छी है, द कराटे किड, और आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए. और इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत 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 अच्छे हैं, और ये मूवी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए. है मूवीज़ में जॉन क्रीज कोबरा काय के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है. हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट हिम, डोजो ऑलमोस्ट बैंड, लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं. He finds someone dangerous, a mysterious karate grandmaster known as Sensei Kaito, a fighter whispered about as the Shadow of Okinawa. काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज करता है. क्रीज मेक्स अ डील विद हिम, हेल्प मी रिबिल्ड कोबरा काय एंड टुगेदर वी विल क्रश मियागी एंड हिज बॉय. एंड गाइस, यहीं से शुरू होती है रियल ट्रबल. ब्रेस योरसेल्व्स. वन काम इवनिंग डैनियल एंड मियागी गार्डन में काम कर रहे होते हैं. सडनली a letter arrives from Okinawa, letter written by a monk named Master Tanji. Miyagi का पुराना दोस्त होता है. Tanji उसको warn करता है, Kaito has returned. He seeks the ancient scrolls, the Miyagi secrets of light and shadows. Daniel confused होता है. Miyagi explains कि centuries पहले उनके ancestors ने कराटे के 2 secret styles बनाए थे. Light style for defense, balance, harmony. Shadow style for aggression, speed and destruction. Kaito belongs to the dark lineage, and now he wants to master both styles. Daniel says, so what do we do? Miyagi replies, we go to Okinawa. And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa, a place filled with memories, honor and old traditions. Here they meet Master Tanji, an elderly monk with a sharp mind. Tanji tells them Kaito has already stolen parts of the ancient scroll. Only one scroll remains protected, the scroll of light.
which contains the ultimate defensive techniques called the Breath of the Mountain. But Kaito will come for it. Daniel learns that Kaito के साथ 3 allied fighters भी हैं, known as the Black Wind Trio, each an undefeated expert in pressure point combat, shadow movement, weaponized karate. बेसिकली गाइज ये लोग DLC लेवल बॉसेस हैं, डेनियल को टफ टाइम देने वाले हैं. डेनियल्स ट्रेनिंग एंटर्स अ न्यू लेवल. मियागी सेज टू डिफीट शैडो यू मस्ट मास्टर लाइट. ट्रेनिंग सीन बैलेंस ऑफ द विंड. डेनियल एट क्लिफ पर खड़ा होता है हैवी विंड्स के बीच में. ही लर्न्स टू फील द अपोनेंट्स मूवमेंट विदाउट सीइंग हिम. द ब्रीथ ऑफ द माउंटेन, स्लो ब्रीथिंग टेक्निक्स को टू स्टोर एनर्जी एंड रीडायरेक्ट फोर्स. Combat with blindfold. Daniel blindfold, sensing footsteps through vibration in the ground. On-strike discipline is Miyagi teaches the ultimate defensive counter. Use opponent's full attack against himself. Guys, ये ट्रेनिंग montage is pure cinema. Goosebumps guaranteed. एक रात मॉन्स्टेरी पर सडन अटैक होता है. काइतो एंड द ब्लैक विंड ट्रायो अराइव. A massive fight breaks out. Miyagi versus Kaito. Daniel versus 2 members of the trio. Tanji protects the scroll. Daniel manages to defeat one of the fighters but gets injured. Miyagi and Kaito's duel is intense. Kaito uses speed so fast he looks like he is disappearing. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. Suddenly, Kaito throws sand in Miyagi's eyes. Dirty move. Daniel yells, Miyagi, I am coming. But Tanji stops him. This is Miyagi's fight. Kaito escapes with 2 scroll pieces. He says the boy will face me in 3 days at the Island of Shadows. Daniel, injured but determined, trains harder. He tells Miyagi, I am not ready. Miyagi replies, no one is ready for life. They become ready by choosing to stand. This line deserves an Oscar, guys. Pure wisdom. Miyagi teaches Daniel the final technique, a meditation stance that bursts into a fast, accurate counterattack using minimal movement. Daniel gains clarity. Karate is not about winning, it is about protecting what matters. It is about bringing balance. Daniel, Miyagi and Tanji reach the mysterious island, foggy, quite ancient. They see Cobra Kai banners everywhere, trees laughing, Kaito waiting on a stone platform. Kaito says, LaRusso, your master can't protect you now, face me. And guys, get ready, this is the craziest fight of the movie. Before reaching Kaito, Daniel must defeat the remaining trio members. First fighter uses pressure points. Daniel counters with Breath of the Mountain. Second uses rapid shadow strikes. Daniel defeats him blindfolded, sensing vibrations. Crowd, Cobra Kai students stunned. Now comes the final duel. Fog rolls in, silence everywhere. Daniel and Kaito face each other. Kaito attacks with lightning fast punches, all offensive, zero restraint. Daniel defends calmly using Miyagi's light techniques. Daniel gets hit hard a few times. He falls to knees, and Kreese laughs. Finish him, Kaito. But Daniel remembers Miyagi's word, stand, even when standing seems impossible. He breathes deeply. Breath of the Mountain activated. Kaito attacks again. This time Daniel redirects his force perfectly. Kaito stumbles. Daniel shifts into the light within stance, and with one clean counter strike, a palm to the chest, he sends Kaito crashing to the ground. And silence. Guys, this movie is insane. ये मूवी सब में बहुत अच्छी है, द कराटे किड, और आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए. और इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत 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 अच्छे हैं, और ये मूवी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए. है मूवीज़ में जॉन क्रीज कोबरा काय के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है. हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट हिम. डोजो
ऑलमोस्ट बैंड, लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं. He finds someone dangerous, a mysterious karate grandmaster known as Sensei Kaito, a fighter whispered about as the Shadow of Okinawa. काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज करता है. क्रीज मेक्स अ डील विद हिम. हेल्प मी रिबिल्ड कोबरा काय एंड टुगेदर वी विल क्रश मियागी एंड हिज बॉय. एंड गाइस, यहीं से शुरू होती है रियल ट्रबल. ब्रेस योरसेल्व्स. वन काम इवनिंग डैनियल एंड मियागी गार्डन में काम कर रहे होते हैं. सडनली अ लेटर अराइव्स फ्रॉम ओकिनावा. लेटर रिटन बाय अ मॉन्क नेम्ड मास्टर तांजी. मियागी का पुराना दोस्त होता है. तांजी उसको वार्न करता है काइतो हैज रिटर्न्ड. ही सीक्स द एंशिएंट स्क्रोल्स, द मियागी सीक्रेट्स ऑफ लाइट एंड शेडोज. डैनियल कंफ्यूज्ड होता है. मियागी एक्सप्लेन्स कि सेंचुरीज पहले उनके एंसेस्टर्स ने कराटे के 2 सीक्रेट स्टाइल्स बनाए थे. लाइट स्टाइल फॉर डिफेंस, बैलेंस, हार्मोनी. शैडो स्टाइल फॉर एग्रेशन, speed and destruction. Kaito belongs to the dark lineage and now he wants to master both styles. Daniel says, so what do we do? Miyagi replies, we go to Okinawa. And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa, a place filled with memories, honor and old traditions. Here they meet Master Tanji, an elderly monk with a sharp mind. Tanji tells them Kaito has already stolen parts of the ancient scroll. Only one scroll remains protected, the scroll of light, which contains the ultimate defensive techniques called the breath of the mountain. But Kaito will come for it. Daniel learns that Kaito के साथ 3 एलाइट फाइटर्स भी हैं known as the Black Wind Trio, each an undefeated expert in pressure point combat, shadow movement, weaponized karate. बेसिकली गाइज ये लोग DLC लेवल बॉसेस हैं. डेनियल को टफ टाइम देने वाले हैं. Daniel's training enters a new level. Miyagi says to defeat Shadow you must master light. ट्रेनिंग सीन, बैलेंस ऑफ द विंड. डेनियल एट क्लिफ पर खड़ा होता है हैवी विंड्स के बीच में. ही लर्न्स टू फील द अपोनेंट्स मूवमेंट विदाउट सीइंग हिम. द ब्रीथ ऑफ द माउंटेन, स्लो ब्रीथिंग टेक्निक्स को टू स्टोर एनर्जी एंड रीडायरेक्ट फोर्स. कॉम्बैट विद ब्लाइंडफोल्ड. डेनियल ब्लाइंडफोल्ड sensing footsteps through vibration in the ground. On strike discipline is Miyagi teaches the ultimate defensive counter. Choose opponent's full attack against himself. Guys, ये ट्रेनिंग montage is pure cinema. Goosebumps guaranteed. एक रात मॉन्स्टेरी पर सडन अटैक होता है. काइतो एंड द ब्लैक विंड ट्रायो अराइव. अ मैसिव फाइट ब्रेक्स आउट. मियागी वर्सेस काइतो. डेनियल वर्सेस 2 members of the trio. Tanji protects the scroll. Daniel manages to defeat one of the fighters but gets injured. Miyagi and Kaito's duel is intense. Kaito uses speed so fast he looks like he is disappearing. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. Suddenly, Kaito throws sand in Miyagi's eyes. Dirty move. Daniel yells, Miyagi, I am coming. But Tanji stops him. This is Miyagi's fight. Kaito escapes with 2 scroll pieces. He says the boy will face me in 3 days at the Island of Shadows. Daniel, injured but determined, trains harder. He tells Miyagi, I am not ready. Miyagi replies, no one is ready for life. They become ready by choosing to stand. This line deserves an Oscar, guys. Pure wisdom. Miyagi teaches Daniel the final technique, a meditation stance that bursts into a fast, accurate counterattack using minimal movement. Daniel gains clarity. Karate is not about winning, it is about protecting what matters. It is about bringing balance. Daniel, Miyagi and Tanji reach the mysterious island, foggy, quite ancient. They see Cobra Kai banners everywhere.
Chris laughing, Kaito waiting on a stone platform. Kaito says, Laruso, your master can't protect you now, face me. And guys, get ready, this is the craziest fight of the movie. Before reaching Kaito, Daniel must defeat the remaining trio members. First fighter uses pressure points. Daniel counters with Breath of the Mountain. Second uses rapid shadow strikes. Daniel defeats him blindfolded, sensing vibrations. Crowd, Cobra Kai students stunned. Now comes the final duel. Fog rolls in, silence everywhere. Daniel and Kaito face each other. Kaito attacks with lightning fast punches, all offensive, zero restraint. Daniel defends calmly using Miyagi's light techniques. Daniel gets hit hard a few times, he falls to knees, and Chris laughs, finish him Kaito. But Daniel remembers Miyagi's word, stand, even when standing seems impossible. He breathes deeply, breath of the mountain activated. Kaito attacks again. This time Daniel redirects his force perfectly. Kaito stumbles. Daniel shifts into the light within stance, and with one clean counter strike, a palm to the chest, he sends Kaito crashing to the ground. And silence. गाइज दिस मूवी इज़ इंसेन. ये मूवी सब में बहुत अच्छी है, द कराटे किड, और आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए. और इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत 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 अच्छे हैं, और ये मूवी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए. है मूवीज़ में जॉन क्रीज कोबरा काय के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है. हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट हिम, डोजो ऑलमोस्ट बैंड, लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं. He finds someone dangerous, a mysterious karate grandmaster known as Sensei Kaito, a fighter whispered about as the Shadow of Okinawa. काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज करता है. क्रीज मेक्स अ डील विद हिम, हेल्प मी रिबिल्ड कोबरा काय एंड टुगेदर वी विल क्रश मियागी एंड हिज बॉय. एंड गाइस, यहीं से शुरू होती है रियल ट्रबल. ब्रेस योरसेल्व्स. वन काम इवनिंग डैनियल एंड मियागी गार्डन में काम कर रहे होते हैं. सडनली अ लेटर अराइव्स फ्रॉम ओकिनावा. लेटर रिटन बाय अ मॉन्क नेम्ड मास्टर तांजी. मियागी का पुराना दोस्त होता है. तांजी उसको वार्न करता है, काइतो हैज रिटर्न्ड. He seeks the ancient scrolls, the Miyagi secrets of light and shadows. डैनियल कंफ्यूज्ड होता है. मियागी एक्सप्लेन्स कि सेंचुरीज पहले उनके एंसेस्टर्स ने कराटे के 2 सीक्रेट स्टाइल्स बनाए थे. लाइट स्टाइल फॉर डिफेंस, बैलेंस, हार्मोनी. शैडो स्टाइल फॉर एग्रेशन, स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन. काइतो बिलोंग्स टू द डार्क lineage. And now he wants to master both styles. Daniel says, so what do we do? Miyagi replies, we go to Okinawa. And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa, a place filled with memories, honor and old traditions. Here they meet Master Tanji, an elderly monk with a sharp mind. Tanji tells them Kaito has already stolen parts of the ancient scroll. Only one scroll remains protected, the scroll of light, which contains the ultimate defensive techniques called the Breath of the Mountain. But Kaito will come for it. Daniel learns that Kaito के साथ 3 elite fighters भी हैं, known as the Black Wind Trio. Each an undefeated expert in pressure point combat, shadow movement, weaponized karate. Basically guys, ये लोग DLC level bosses हैं. डेनियल को tough time देने वाले हैं. Daniel's training enters a new level. Miyagi says to defeat shadow you must master light. Training scene, balance of the wind. Daniel at cliff पर खड़ा होता है heavy winds के बीच में. He learns to feel the opponent's movement without seeing him. The breath of the mountain, slow breathing techniques to store energy and redirect force. Combat with blindfold. Daniel blindfold, sensing
footsteps through vibration in the ground. On-strike discipline is Miyagi teaches the ultimate defensive counter. Use opponent's full attack against himself. गाइस ये ट्रेनिंग मोन्टाज इज प्योर सिनेमा, गूज बम्स गारंटेड। एक रात मॉन्स्टेरी पर सडन अटैक होता है। काइतो एंड द ब्लैक विंड ट्रायो अराइव। अ मैसिव फाइट ब्रेक्स आउट, मियागी वर्सेस काइतो, डैनियल वर्सेस टू members of the trio. Tanji protects the scroll. Daniel manages to defeat one of the fighters but gets injured. Miyagi and Kaito's duel is intense. Kaito uses speed so fast he looks like he is disappearing. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. Suddenly, Kaito throws sand in Miyagi's eyes. Dirty move. Daniel yells, Miyagi, I am coming. But Tanji stops him. This is Miyagi's fight. Kaito escapes with 2 scroll pieces. He says, the boy will face me in 3 days at the Island of Shadows. Daniel, injured but determined, trains harder. He tells Miyagi, I am not ready. Miyagi replies, no one is ready for life. They become ready by choosing to stand. This line deserves an Oscar, guys. Pure wisdom. Miyagi teaches Daniel the final technique, a meditation stance that bursts into a fast, accurate counter-attack using minimal movement. Daniel gains clarity. Karate is not about winning, it is about protecting what matters. It is about bringing balance. Daniel, Miyagi and Tanji reach the mysterious island, foggy, quite ancient. They see Cobra Kai banners everywhere. Kreese laughing, Kaito waiting on a stone platform. Kaito says, LaRusso, your master can't protect you now, face me. And guys, get ready, this is the craziest fight of the movie. Before reaching Kaito, Daniel must defeat the remaining trio members. First fighter uses pressure points. Daniel counters with Breath of the Mountain. Second uses rapid shadow strikes. Daniel defeats him blindfolded, sensing vibrations. Crowd, Cobra Kai students stunned. Now comes the final duel. Fog rolls in, silence everywhere. Daniel and Kaito face each other. Kaito attacks with lightning fast punches, all offensive, zero restraint. Daniel defends calmly using Miyagi's light techniques. Daniel gets hit hard a few times. He falls to knees, and Kreese laughs, finish him Kaito. But Daniel remembers Miyagi's word, stand, even when standing seems impossible. He breathes deeply, breath of the mountain activated. Kaito attacks again. This time Daniel redirects his force perfectly. Kaito stumbles. Daniel shifts into the light within stance, and with one clean counter strike, a palm to the chest, he sends Kaito crashing to the ground, and silence. Guys, this movie is insane. ये मूवी सब में बहुत अच्छी है, द कराटे किड, और आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए। और इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत 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 अच्छे हैं, और ये मूवी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। है मूवीज़ में जॉन क्रीज कोबरा काय के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है। हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट हिम, डोजो ऑलमोस्ट बैंड, लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं। ही फाइंड्स समवन डेंजरस, अ मिस्टीरियस कराटे ग्रैंड मास्टर नॉन एज सेंसे काइतो, अ फाइटर विस्पर्ड अबाउट एज द शेडो ऑफ ओकिनावा। काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज़ करता है। क्रीज मेक्स अ डील विद हिम, हेल्प मी रिबिल्ड कोबरा काय एंड टुगेदर वी विल क्रश मियागी एंड हिज बॉय। एंड गाइस, यहीं से शुरू होती है रियल ट्रबल। ब्रेस योरसेल्फ। वन काम इवनिंग, डैनियल एंड मियागी गार्डन में काम कर रहे होते हैं। सडनली अ लेटर अराइव्स फ्रॉम ओकिनावा, लेटर रिटन बाय अ monk नेम्ड मास्टर तांजी। मियागी का पुराना दोस्त होता है। तांजी उसको वार्न करता है, काइतो हैज़ रिटर्न्ड। ही सीक्स द एंशिएंट स्क्रोल्स, द मियागी सीक्रेट्स ऑफ लाइट एंड शेडोज।
डैनियल कंफ्यूज्ड होता है। मियागी एक्सप्लेन्स कि सेंचुरीज पहले उनके एंसेस्टर्स ने कराटे के दो सीक्रेट स्टाइल्स बनाए थे, लाइट स्टाइल फॉर डिफेंस, बैलेंस, हार्मोनी, शैडो स्टाइल फॉर एग्रेशन, speed and destruction. Kaito belongs to the dark lineage and now he wants to master both styles. Daniel says, "So what do we do?" Miyagi replies, "We go to Okinawa." And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa, a place filled with memories, honor, and old traditions. Here they meet Master Tanji, an elderly monk with a sharp mind. Tanji tells them Kaito has already stolen parts of the ancient scroll. Only one scroll remains protected, the scroll of light, which contains the ultimate defensive techniques called the breath of the mountain. But Kaito will come for it. Daniel learns that Kaito के साथ 3 एलाइट फाइटर्स भी हैं known as the Black Wind Trio, each an undefeated expert in pressure point combat, shadow movement, weaponized karate. बेसिकली गाइज ये लोग DLC लेवल बॉसेस हैं। डेनियल को टफ टाइम देने वाले हैं। डेनियल्स ट्रेनिंग एंटर्स अ न्यू लेवल। मियागी सेज टू डिफीट शैडो यू मस्ट मास्टर लाइट। ट्रेनिंग सीन, बैलेंस ऑफ द विंड। डेनियल एक क्लिफ पर खड़ा होता है हैवी विंड्स के बीच में। ही लर्न्स टू फील द अपोनेंट्स मूवमेंट विदाउट सीइंग हिम। द ब्रीथ ऑफ द माउंटेन, स्लो ब्रीथिंग टेक्निक्स को टू स्टोर एनर्जी एंड रीडायरेक्ट फोर्स। कॉम्बैट विद ब्लाइंडफोल्ड। डेनियल ब्लाइंडफोल्ड, सेंसिंग footsteps through vibration in the ground. On-strike discipline is Miyagi teaches the ultimate defensive counter. Use opponent's full attack against himself. Guys, ये training montage is pure cinema. Goosebumps guaranteed. एक रात मॉन्स्टेरी पर सडन अटैक होता है। काइतो एंड द ब्लैक विंड ट्रायो अराइव। A massive fight breaks out. Miyagi versus Kaito. Daniel versus 2 members of the trio. Tanji protects the scroll. Daniel manages to defeat one of the fighters but gets injured. Miyagi and Kaito's duel is intense. Kaito uses speed so fast he looks like he is disappearing. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. Suddenly, Kaito throws sand in Miyagi's eyes. Dirty move. Daniel yells, "Miyagi, I am coming." But Tanji stops him. This is Miyagi's fight. Kaito escapes with 2 scroll pieces. He says, "The boy will face me in 3 days at the Island of Shadows." Daniel, injured but determined, trains harder. He tells Miyagi, "I am not ready." Miyagi replies, "No one is ready for life. They become ready by choosing to stand." This line deserves an Oscar, guys. Pure wisdom. Miyagi teaches Daniel the final technique, a meditation stance that bursts into a fast, accurate counterattack using minimal movement. Daniel gains clarity. Karate is not about winning, it is about protecting what matters. It is about bringing balance. Daniel, Miyagi and Tanji reach the mysterious island, foggy, quite ancient. They see Cobra Kai banners everywhere. Kreese laughing, Kaito waiting on a stone platform. Kaito says, "LaRusso, your master can't protect you now, face me." And guys, get ready, this is the craziest fight of the movie. Before reaching Kaito, Daniel must defeat the remaining trio members. First fighter uses pressure points. Daniel counters with breath of the mountain. Second uses rapid shadow strikes. Daniel defeats him blindfolded, sensing vibrations. Crowd, Cobra Kai students stunned. Now comes the final duel. Fog rolls in, silence everywhere. Daniel and Kaito face each other. Kaito attacks with lightning fast punches, all offensive, zero restraint. Daniel defends calmly using Miyagi's light techniques. Daniel gets hit hard a few times. He falls to knees.
And Kreese laughs, finish him Kaito, but Daniel remembers Miyagi's word, stand. Even when standing seems impossible, he breathes deeply, breath of the mountain activated. Kaito attacks again. This time Daniel redirects his force perfectly. Kaito stumbles. Daniel shifts into the light within stance, and with one clean counter strike, a palm to the chest, he sends Kaito crashing to the ground. And silence. गाइस दिस मूवी इज़ इंसेन। ये मूवी सब में बहुत अच्छी है, द कराटे किड, और आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए। और इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत 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 अच्छे हैं, और ये मूवी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। ती है मूवीज़ में जॉन क्रीज कोबरा काई के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है। हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट हिम डोजो ऑलमोस्ट बैंड, लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं। ही फाइंड समवन डेंजरस, अ मिस्टीरियस कराटे ग्रैंड मास्टर नॉन एज सेंसे काइतो, अ फाइटर विस्पर्ड अबाउट एज द शैडो ऑफ ओकिनावा। काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज़ करता है। क्रीज मेक्स अ डील विद हिम, हेल्प मी रिबिल्ड कोबरा काय एंड टुगेदर वी विल क्रश मियागी एंड हिज बॉय। एंड गाइस यहीं से शुरू होती है रियल ट्रबल। ब्रेस योर सेल्फ। वन काम इवनिंग डैनियल एंड मियागी गार्डन में काम कर रहे होते हैं। सडनली अ लेटर अराइव्स फ्रॉम ओकिनावा, लेटर रिटन बाय अ मोंक नेम्ड मास्टर तांजी। मियागी का पुराना दोस्त होता है। तांजी उसको वार्न करता है काइतो हैज़ रिटर्न्ड। ही सीक्स द एंशिएंट स्क्रोल्स, द मियागी सीक्रेट्स ऑफ लाइट एंड शेडोज। डैनियल कंफ्यूज्ड होता है। मियागी एक्सप्लेन्स कि सेंचुरीज पहले उनके एंसेस्टर्स ने कराटे के 2 सीक्रेट स्टाइल्स बनाए थे, लाइट स्टाइल फॉर डिफेंस, बैलेंस, हार्मोनी, shadow style for aggression, speed and destruction. Kaito belongs to the dark lineage and now he wants to master both styles. Daniel says, so what do we do? Miyagi replies, we go to Okinawa. And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa, a place filled with memories, honor and old traditions. Here they meet Master Tanji, an elderly monk with a sharp mind. Tanji tells them Kaito has already stolen parts of the ancient scroll. Only one scroll remains protected, the scroll of light, which contains the ultimate defensive techniques called the breath of the mountain. But Kaito will come for it. Daniel learns that Kaito के साथ 3 एलाइट फाइटर्स भी हैं known as the Black Wind Trio, each an undefeated expert in pressure point combat, shadow movement, weaponized karate. Basically guys ये लोग DLC level bosses हैं। डेनियल को टफ टाइम देने वाले हैं। Daniel's training enters a new level. Miyagi says to defeat shadow you must master light. ट्रेनिंग सीन, बैलेंस ऑफ द विंड। डैनियल एक क्लिफ पर खड़ा होता है हैवी विंड्स के बीच में। ही लर्न्स टू फील द अपोनेंट्स मूवमेंट विदाउट सीइंग हिम। द ब्रीथ ऑफ द माउंटेन, स्लो ब्रीथिंग टेक्निक्स को टू स्टोर एनर्जी एंड रीडायरेक्ट फोर्स। कॉम्बैट विद ब्लाइंडफोल्ड। डैनियल ब्लाइंडफोल्ड सेंसिंग footsteps through vibration in the ground. On strike discipline is Miyagi teaches the ultimate defensive counter. Use opponent's full attack against himself. Guys ये ट्रेनिंग मोन्टाज इज प्योर सिनेमा, गूज़बम्प्स गारंटेड। एक रात मॉन्स्टेरी पर सडन अटैक होता है। काइतो एंड द ब्लैक विंड ट्रायो अराइव। अ मैसिव फाइट ब्रेक्स आउट, मियागी वर्सेस काइतो, डैनियल वर्सेस 2 members of the trio. Tanji protects the scroll. Daniel manages to defeat one of the fighters but gets injured. Miyagi and Kaito's duel is intense. Kaito uses speed so fast he looks like he is disappearing. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. Suddenly, Kaito throws sand in Miyagi's eyes. Dirty move. Daniel yells.
Miyagi, I am coming. But Tanji stops him. This is Miyagi's fight. Kaito escapes with two scroll pieces. He says, the boy will face me in 3 days at the island of shadows. Daniel, injured but determined, trains harder. He tells Miyagi, I am not ready. Miyagi replies, no one is ready for life. They become ready by choosing to stand. This line deserves an Oscar, guys. Pure wisdom. Miyagi teaches Daniel the final technique, a meditation stance that bursts into a fast, accurate counterattack using minimal movement. Daniel gains clarity. Karate is not about winning, it is about protecting what matters. It is about it. It is about bringing balance. Daniel, Miyagi, and Tanji reach the mysterious island, foggy, quite ancient. They see Cobra Kai banners everywhere. Kreese laughing, Kaito waiting on a stone platform. Kaito says, LaRusso, your master can't protect you now, face me. And guys, get ready, this is the craziest fight of the movie. Before reaching Kaito, Daniel must defeat the remaining trio members. First fighter uses pressure points. Daniel counters with Breath of the Mountain. Second uses rapid shadow strikes. Daniel defeats him blindfolded, sensing vibrations. Crowd, Cobra Kai students stunned. Now comes the final duel. Fog rolls in, silence everywhere. Daniel and Kaito face each other. Kaito attacks with lightning fast punches, all offensive, zero restraint. Daniel defends calmly using Miyagi's light techniques. Daniel gets hit hard a few times. He falls to knees, and Kreese laughs. Finish him, Kaito. But Daniel remembers Miyagi's word: stand, even when standing seems impossible. He breathes deeply. Breath of the Mountain activated. Kaito attacks again. This time Daniel redirects his force perfectly. Kaito stumbles. Daniel shifts into the light within stance, and with one clean counter strike, a palm to the chest, he sends Kaito crashing to the ground. And silence. Guys, this movie is insane. ये मूवी सब में बहुत अच्छी है. द कराटे किड, और आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए. और इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत 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 अच्छे हैं. और ये मूवी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए. है मूवीज़ में जॉन क्रीज कोबरा काय के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है. हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट हिम, डोजो ऑलमोस्ट बैंड, लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं. ही फाइंड समवन डेंजरस, अ मिस्टीरियस कराटे ग्रैंड मास्टर नॉन एज सेंसे काइतो, अ फाइटर विस्पर्ड अबाउट एज द शैडो ऑफ ओकिनावा. काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज करता है. क्रीज मेक्स अ डील विद हिम, हेल्प मी रिबिल्ड कोबरा काय एंड टुगेदर वी विल क्रश मियागी एंड हिज बॉय. एंड गाइज, यहीं से शुरू होती है रियल ट्रबल. ब्रेस योरसेल्व्स. वन काम इवनिंग, डैनियल एंड मियागी गार्डन में काम कर रहे होते हैं. सडनली अ लेटर अराइव्स फ्रॉम ओकिनावा. लेटर रिटन बाय अ मोंक नेम्ड मास्टर तांजी. मियागी का पुराना दोस्त होता है. तांजी उसको वार्न करता है, काइतो हैज रिटर्न्ड. ही सीक्स द एंशिएंट स्क्रोल्स, द मियागी सीक्रेट्स ऑफ लाइट एंड शैडोज. डैनियल कंफ्यूज्ड होता है. मियागी एक्सप्लेन्स कि सेंचुरीज पहले उनके एंसेस्टर्स ने कराटे के 2 सीक्रेट स्टाइल्स बनाए थे. लाइट स्टाइल फॉर डिफेंस, बैलेंस, हार्मोनी. शैडो स्टाइल फॉर एग्रेशन, speed and destruction. Kaito belongs to the dark lineage and now he wants to master both styles. Daniel says, so what do we do? Miyagi replies, we go to Okinawa. And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa, a place filled with memories, honor and old traditions. Here they meet Master Tanji, an elderly monk with a sharp mind. Tanji tells them Kaito has already stolen parts of the ancient scroll. Only one scroll remains protected, the scroll of light.
which contains the ultimate defensive techniques called the Breath of the Mountain. But Kaito will come for it. Daniel learns that Kaito के साथ 3 allied fighters भी हैं, known as the Black Wind Trio, each an undefeated expert in pressure point combat, shadow movement, weaponized karate. बेसिकली गाइज ये लोग DLC लेवल बॉसेस हैं, डेनियल को टफ टाइम देने वाले हैं। डेनियल्स ट्रेनिंग एंटर्स अ न्यू लेवल। मियागी सेज टू डिफीट शैडो यू मस्ट मास्टर लाइट। ट्रेनिंग सीन बैलेंस ऑफ द विंड। डेनियल एक क्लिफ पर खड़ा होता है हैवी विंड्स के बीच में। ही लर्न्स टू फील द अपोनेंट्स मूवमेंट विदाउट सीइंग हिम। द ब्रीथ ऑफ द माउंटेन, स्लो ब्रीथिंग टेक्निक्स को टू स्टोर एनर्जी एंड रीडायरेक्ट फोर्स। Combat with blindfold. Daniel blindfold, sensing footsteps through vibration in the ground. On strike discipline is Miyagi teaches the ultimate defensive counter. Choose opponent's full attack against himself. Guys, ये training montage is pure cinema. Goosebumps guaranteed. एक रात मॉन्स्टेरी पर सडन अटैक होता है। काइतो एंड द ब्लैक विंड ट्रायो अराइव। A massive fight breaks out. Miyagi versus Kaito. Daniel versus 2 members of the trio. Tanji protects the scroll. Daniel manages to defeat one of the fighters but gets injured. Miyagi and Kaito's duel is intense. Kaito uses speed so fast he looks like he is disappearing. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. Suddenly, Kaito throws sand in Miyagi's eyes. Dirty move. Daniel yells, Miyagi, I am coming. But Tanji stops him. This is Miyagi's fight. Kaito escapes with 2 scroll pieces. He says, the boy will face me in 3 days at the Island of Shadows. Daniel, injured but determined, trains harder. He tells Miyagi, I am not ready. Miyagi replies, no one is ready for life. They become ready by choosing to stand. This line deserves an Oscar, guys. Pure wisdom. Miyagi teaches Daniel the final technique, a meditation stance that bursts into a fast, accurate counter-attack using minimal movement. Daniel gains clarity. Karate is not about winning, it is about protecting what matters. It is about bringing balance. Daniel, Miyagi and Tanji reach the mysterious island, foggy, quite ancient. They see Cobra Kai banners everywhere. Kreese laughing, Kaito waiting on a stone platform. Kaito says, LaRusso, your master can't protect you now, face me. And guys, get ready, this is the craziest fight of the movie. Before reaching Kaito, Daniel must defeat the remaining trio members. First fighter uses pressure points. Daniel counters with Breath of the Mountain. Second uses rapid shadow strikes. Daniel defeats him blindfolded, sensing vibrations. Crowd, Cobra Kai students stunned. Now comes the final duel. Fog rolls in, silence everywhere. Daniel and Kaito face each other. Kaito attacks with lightning fast punches, all offensive, zero restraint. Daniel defends calmly using Miyagi's light techniques. Daniel gets hit hard a few times. He falls to knees, and Kreese laughs. Finish him, Kaito. But Daniel remembers Miyagi's word, stand, even when standing seems impossible. He breathes deeply. Breath of the Mountain activated. Kaito attacks again. This time Daniel redirects his force perfectly. Kaito stumbles. Daniel shifts into the light within stance, and with one clean counter strike, a palm to the chest, he sends Kaito crashing to the ground. And silence. Guys, this movie is insane. ये मूवी सब में बहुत अच्छी है, The Karate Kid, और आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए। और इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं और ये मूवी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। है मूवीज़ में जॉन क्रीज कोबरा काय के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है। हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट हिम, डोजो ऑलमोस्ट बैंड,
लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं. He finds someone dangerous, a mysterious karate grandmaster known as Sensei Kaito, a fighter whispered about as the Shadow of Okinawa. काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज करता है. क्रीज मेक्स अ डील विद हिम. हेल्प मी रिबिल्ड कोबरा काय एंड टुगेदर वी विल क्रश मियागी एंड हिज बॉय. एंड गाइस, यहीं से शुरू होती है रियल ट्रबल. ब्रेस योरसेल्फ. वन काम इवनिंग डैनियल एंड मियागी गार्डन में काम कर रहे होते हैं. सडनली अ लेटर अराइव्स फ्रॉम ओकिनावा. लेटर रिटन बाय अ मॉन्क नेम्ड मास्टर तांजी. मियागी का पुराना दोस्त होता है. तांजी उसको वार्न करता है काइतो हैज रिटर्न्ड. He seeks the ancient scrolls, the Miyagi secrets of light and shadows. Daniel confused होता है. Miyagi explains कि centuries पहले उनके ancestors ने कराटे के 2 secret styles बनाए थे. Light style for defense, balance, harmony. Shadow style for aggression, speed and destruction. Kaito belongs to the dark lineage. And now he wants to master both styles. Daniel says, so what do we do? Miyagi replies, we go to Okinawa. And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa, a place filled with memories, honor and old traditions. Here they meet Master Tanji, an elderly monk with a sharp mind. Tanji tells them Kaito has already stolen parts of the ancient scroll. Only one scroll remains protected, the scroll of light, which contains the ultimate defensive techniques called the breath of the mountain. But Kaito will come for it. Daniel learns that Kaito के साथ 3 elite fighters भी हैं, known as the Black Wind Trio, each an undefeated expert in pressure point combat, shadow movement, weaponized karate. Basically guys, ये लोग DLC level bosses हैं. Daniel को tough time देने वाले हैं. Daniel's training enters a new level. Miyagi says to defeat Shadow, you must master light. Training scene, balance of the wind. Daniel at cliff पर खड़ा होता है heavy winds के बीच में. He learns to feel the opponent's movement without seeing him. The breath of the mountain, slow breathing techniques to store energy and redirect force. Combat with blindfold. Daniel blindfold, sensing footsteps through vibration in the ground. On strike discipline is Miyagi teaches the ultimate defensive counter. Use opponent's full attack against himself. Guys, ये ट्रेनिंग montage is pure cinema. Goosebumps guaranteed. एक रात मॉन्स्टेरी पर सडन अटैक होता है. काइतो एंड द ब्लैक विंड ट्रायो अराइव. A massive fight breaks out. Miyagi versus Kaito. Daniel versus 2 members of the trio. Tanji protects the scroll. Daniel manages to defeat one of the fighters but gets injured. Miyagi and Kaito's duel is intense. Kaito uses speed so fast he looks like he is disappearing. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. Suddenly, Kaito throws sand in Miyagi's eyes. Dirty move. Daniel yells, Miyagi, I am coming. But Tanji stops him. This is Miyagi's fight. Kaito escapes with 2 scroll pieces. He says, the boy will face me in 3 days at the Island of Shadows. Daniel, injured but determined, trains harder. He tells Miyagi, I am not ready. Miyagi replies, no one is ready for life. They become ready by choosing to stand. This line deserves an Oscar, guys. Pure wisdom. Miyagi teaches Daniel the final technique, a meditation stance that bursts into a fast, accurate counter-attack using minimal movement. Daniel gains clarity. Karate is not about winning, it is about protecting what matters. It is about bringing balance. Daniel, Miyagi and Tanji reach the mysterious island, foggy, quite ancient. They see Cobra Kai banners everywhere.
Chris laughing, Kaito waiting on a stone platform. Kaito says, Larusso, your master can't protect you now, face me. And guys, get ready, this is the craziest fight of the movie. Before reaching Kaito, Daniel must defeat the remaining trio members. First fighter uses pressure points. Daniel counters with Breath of the Mountain. Second uses rapid shadow strikes. Daniel defeats him blindfolded, sensing vibrations. Crowd, Cobra Kai students stunned. Now comes the final duel. Fog rolls in, silence everywhere. Daniel and Kaito face each other. Kaito attacks with lightning fast punches, all offensive, zero restraint. Daniel defends calmly using Miyagi's light techniques. Daniel gets hit hard a few times, he falls to knees, and Chris laughs, finish him Kaito. But Daniel remembers Miyagi's word, stand, even when standing seems impossible. He breathes deeply, Breath of the Mountain activated. Kaito attacks again. This time Daniel redirects his force perfectly. Kaito stumbles. Daniel shifts into the light within stance, and with one clean counter strike, a palm to the chest, he sends Kaito crashing to the ground. And silence. Guys, this movie is insane. ये मूवी सब में बहुत अच्छी है, द कराटे किड, और आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए। और इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत 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 अच्छे हैं, और ये मूवी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। है मूवीज़ में जॉन क्रीज कोबरा काय के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है। हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट हिम, डोजो ऑलमोस्ट बैंड, लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं। He finds someone dangerous, a mysterious karate grandmaster known as Sensei Kaito, a fighter whispered about as the Shadow of Okinawa. काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज करता है। क्रीज मेक्स अ डील विद हिम, हेल्प मी रिबिल्ड कोबरा काय एंड टुगेदर वी विल क्रश मियागी एंड हिज बॉय। एंड गाइस, यहीं से शुरू होती है रियल ट्रबल। ब्रेस योरसेल्व्स। वन काम इवनिंग डैनियल एंड मियागी गार्डन में काम कर रहे होते हैं। सडनली अ लेटर अराइव्स फ्रॉम ओकिनावा, लेटर रिटन बाय अ मोंक नेम्ड मास्टर तांजी। मियागी का पुराना दोस्त होता है। तांजी उसको वार्न करता है, काइतो हैज़ रिटर्न्ड। ही सीक्स द एंशिएंट स्क्रोल्स, द मियागी सीक्रेट्स ऑफ लाइट एंड शेडोज। डैनियल कंफ्यूज्ड होता है। मियागी एक्सप्लेन्स कि सेंचुरीज पहले उनके एंसेस्टर्स ने कराटे के 2 सीक्रेट स्टाइल्स बनाए थे, लाइट स्टाइल फॉर डिफेंस, बैलेंस, हार्मोनी, शैडो स्टाइल फॉर एग्रेशन, स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन। काइतो बिलोंग्स टू द डार्क lineage and now he wants to master both styles. Daniel says, so what do we do? Miyagi replies, we go to Okinawa. And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa, a place filled with memories, honor and old traditions. Here they meet Master Tanji, an elderly monk with a sharp mind. Tanji tells them Kaito has already stolen parts of the ancient scroll. Only one scroll remains protected, the scroll of light, which contains the ultimate defensive techniques called the Breath of the Mountain. But Kaito will come for it. Daniel learns that Kaito के साथ 3 elite fighters भी हैं, known as the Black Wind Trio, each an undefeated expert in pressure point combat, shadow movement, weaponized karate. बेसिकली गाइज ये लोग DLC लेवल बॉसेस हैं। डेनियल को टफ टाइम देने वाले हैं। डेनियल्स ट्रेनिंग एंटर्स अ न्यू लेवल। मियागी सेज टू डिफीट शैडो यू मस्ट मास्टर लाइट। ट्रेनिंग सीन, बैलेंस ऑफ द विंड। डेनियल एक क्लिफ पर खड़ा होता है हैवी विंड्स के बीच में। ही लर्न्स टू फील द अपोनेंट्स मूवमेंट विदाउट सीइंग हिम। द ब्रीथ ऑफ द माउंटेन, स्लो ब्रीथिंग टेक्निक्स को टू स्टोर एनर्जी एंड रीडायरेक्ट फोर्स। Combat with blindfold, Daniel blindfold, sensing
footsteps through vibration in the ground. On-strike discipline is Miyagi teaches the ultimate defensive counter. Choose opponent's full attack against himself. Guys, ये ट्रेनिंग montage is pure cinema. Goosebumps guaranteed. एक रात मॉन्स्टेरी पर सडन अटैक होता है. काइतो एंड द ब्लैक विंड ट्रायो अराइव. A massive fight breaks out. Miyagi versus Kaito. Daniel versus two members of the trio. Tanji protects the scroll. Daniel manages to defeat one of the fighters but gets injured. Miyagi and Kaito's duel is intense. Kaito uses speed so fast he looks like he is disappearing. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. Suddenly, Kaito throws sand in Miyagi's eyes. Dirty move. Daniel yells, Miyagi, I am coming. But Tanji stops him. This is Miyagi's fight. Kaito escapes with 2 scroll pieces. He says, the boy will face me in 3 days at the Island of Shadows. Daniel, injured but determined, trains harder. He tells Miyagi, I am not ready. Miyagi replies, no one is ready for life. They become ready by choosing to stand. This line deserves an Oscar, guys. Pure wisdom. Miyagi teaches Daniel the final technique, a meditation stance that bursts into a fast, accurate counterattack using minimal movement. Daniel gains clarity. Karate is not about winning, it is about protecting what matters. It is about bringing balance. Daniel, Miyagi and Tanji reach the mysterious island, foggy, quite ancient. They see Cobra Kai banners everywhere. Kreese laughing, Kaito waiting on a stone platform. Kaito says, LaRusso, your master can't protect you now, face me. And guys, get ready, this is the craziest fight of the movie. Before reaching Kaito, Daniel must defeat the remaining trio members. First fighter uses pressure points. Daniel counters with Breath of the Mountain. Second uses rapid shadow strikes. Daniel defeats him blindfolded, sensing vibrations. Crowd, Cobra Kai students stunned. Now comes the final duel. Fog rolls in, silence everywhere. Daniel and Kaito face each other. Kaito attacks with lightning fast punches, all offensive, zero restraint. Daniel defends calmly using Miyagi's light techniques. Daniel gets hit hard a few times. He falls to knees, and Kreese laughs. Finish him, Kaito. But Daniel remembers Miyagi's word, stand, even when standing seems impossible. He breathes deeply, Breath of the Mountain activated. Kaito attacks again. This time Daniel redirects his force perfectly. Kaito stumbles. Daniel shifts into the light within stance, and with one clean counter strike, a palm to the chest, he sends Kaito crashing to the ground. And silence. Guys, this movie is insane. ये मूवी सब में बहुत अच्छी है. द कराटे किड, और आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए. और इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत 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 अच्छे हैं. और ये मूवी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए. है मूवीज़ में जॉन क्रीज कोबरा काय के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है. हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट हिम, डोजो ऑलमोस्ट बैंड, लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं. ही फाइंड्स समवन डेंजरस, अ मिस्टीरियस कराटे ग्रैंड मास्टर known as Sensei Kaito, a fighter whispered about as the shadow of Okinawa. काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज़ करता है. क्रीज मेक्स अ डील विद हिम, हेल्प मी रिबिल्ड कोबरा काय एंड टुगेदर वी विल क्रश मियागी एंड हिज बॉय. एंड गाइज, यहीं से शुरू होती है रियल ट्रबल. ब्रेस योर सेल्फ. वन काम इवनिंग डैनियल एंड मियागी गार्डन में काम कर रहे होते हैं. सडनली अ लेटर अराइव्स फ्रॉम ओकिनावा. लेटर रिटन बाय अ मोंक नेम्ड मास्टर तांजी. मियागी का पुराना दोस्त होता है. तांजी उसको वार्न करता है, काइतो हैज़ रिटर्न्ड. ही सीक्स द एंशिएंट स्क्रोल्स, द मियागी सीक्रेट्स ऑफ लाइट एंड शेडोज.
डैनियल कंफ्यूज्ड होता है। मियागी एक्सप्लेन्स कि सेंचुरीज पहले उनके एंसेस्टर्स ने कराटे के दो सीक्रेट स्टाइल्स बनाए थे, लाइट स्टाइल फॉर डिफेंस, बैलेंस, हार्मोनी, शैडो स्टाइल फॉर एग्रेशन, speed and destruction. Kaito belongs to the dark lineage and now he wants to master both styles. Daniel says, "So what do we do?" Miyagi replies, "We go to Okinawa." And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa, a place filled with memories, honor, and old traditions. Here they meet Master Tanji, an elderly monk with a sharp mind. Tanji tells them Kaito has already stolen parts of the ancient scroll. Only one scroll remains protected, the scroll of light, which contains the ultimate defensive techniques called the breath of the mountain. But Kaito will come for it. Daniel learns that Kaito के साथ 3 elite fighters भी हैं, known as the Black Wind Trio, each an undefeated expert in pressure point combat, shadow movement, weaponized karate. बेसिकली गाइज ये लोग DLC लेवल बॉसेस हैं, डेनियल को टफ टाइम देने वाले हैं। डेनियल्स ट्रेनिंग एंटर्स अ न्यू लेवल। मियागी सेज टू डिफीट शैडो यू मस्ट मास्टर लाइट। ट्रेनिंग सीन, बैलेंस ऑफ द विंड। डेनियल एक क्लिफ पर खड़ा होता है हैवी विंड्स के बीच में। ही लर्न्स टू फील द अपोनेंट्स मूवमेंट विदाउट सीइंग हिम। द ब्रीथ ऑफ द माउंटेन, स्लो ब्रीथिंग टेक्निक्स को टू स्टोर एनर्जी एंड रीडायरेक्ट फोर्स। Combat with blindfold. Daniel blindfold, sensing footsteps through vibration in the ground. On strike discipline is Miyagi teaches the ultimate defensive counter. Use opponent's full attack against himself. Guys, ये training montage is pure cinema. Goosebumps guaranteed. एक रात मॉन्स्टेरी पर सडन अटैक होता है। काइतो एंड द ब्लैक विंड ट्रायो अराइव। A massive fight breaks out. Miyagi versus Kaito. Daniel versus 2 members of the trio. Tanji protects the scroll. Daniel manages to defeat one of the fighters but gets injured. Miyagi and Kaito's duel is intense. Kaito uses speed so fast he looks like he is disappearing. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. Suddenly, Kaito throws sand in Miyagi's eyes. Dirty move. Daniel yells, "Miyagi, I am coming." But Tanji stops him. This is Miyagi's fight. Kaito escapes with 2 scroll pieces. He says, "The boy will face me in 3 days at the Island of Shadows." Daniel, injured but determined, trains harder. He tells Miyagi, "I am not ready." Miyagi replies, "No one is ready for life. They become ready by choosing to stand." This line deserves an Oscar, guys. Pure wisdom. Miyagi teaches Daniel the final technique, a meditation stance that bursts into a fast, accurate counterattack using minimal movement. Daniel gains clarity. Karate is not about winning, it is about protecting what matters. It is about bringing balance. Daniel, Miyagi and Tanji reach the mysterious island, foggy, quite ancient. They see Cobra Kai banners everywhere, trees laughing, Kaito waiting on a stone platform. Kaito says, "LaRusso, your master can't protect you now, face me." And guys, get ready, this is the craziest fight of the movie. Before reaching Kaito, Daniel must defeat the remaining trio members. First fighter uses pressure points. Daniel counters with Breath of the Mountain. Second uses rapid shadow strikes. Daniel defeats him blindfolded, sensing vibrations. Crowd, Cobra Kai students stunned. Now comes the final duel. Fog rolls in. Silence everywhere. Daniel and Kaito face each other. Kaito attacks with lightning fast punches, all offensive, zero restraint. Daniel defends calmly using Miyagi's light techniques. Daniel gets hit hard a few times. He falls to knees
and Kreese laughs, finish him Kaito, but Daniel remembers Miyagi's word, stand, even when standing seems impossible. He breathes deeply, breath of the mountain activated, Kaito attacks again. This time Daniel redirects his force perfectly. Kaito stumbles, Daniel shifts into the light within stance, and with one clean counter strike, a palm to the chest, he sends Kaito crashing to the ground and silence. गाइस दिस मूवी इज़ इंसेन। ये मूवी सब में बहुत अच्छी है, द कराटे किड, और आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए। और इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत 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 अच्छे हैं, और ये मूवी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। ती है मूवीज़ में जॉन क्रीज कोबरा काय के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है। हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट हिम, डोजो ऑलमोस्ट बैंड, लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं। He finds someone dangerous, a mysterious karate grandmaster known as Sensei Kaito, a fighter whispered about as the shadow of Okinawa. काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज करता है। क्रीज मेक्स अ डील विद हिम, हेल्प मी रिबिल्ड कोबरा काय एंड टुगेदर वी विल क्रश मियागी एंड हिज बॉय। एंड गाइस यहीं से शुरू होती है रियल ट्रबल। ब्रेस योरसेल्व्स। वन काम इवनिंग डैनियल एंड मियागी गार्डन में काम कर रहे होते हैं। सडनली अ लेटर अराइव्स फ्रॉम ओकिनावा, लेटर रिटन बाय अ मॉन्क नेम्ड मास्टर तांजी। मियागी का पुराना दोस्त होता है। तांजी उसको वार्न करता है काइतो हैज़ रिटर्न्ड। He seeks the ancient scrolls, the Miyagi secrets of light and shadows. Daniel confused होता है। Miyagi explains कि centuries पहले उनके ancestors ने कराटे के 2 secret styles बनाए थे, light style for defense, balance, harmony, shadow style for aggression, speed and destruction. Kaito belongs to the dark lineage, and now he wants to master both styles. Daniel says, so what do we do? Miyagi replies, we go to Okinawa. And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa, a place filled with memories, honor and old traditions. Here they meet Master Tanji, an elderly monk with a sharp mind. Tanji tells them Kaito has already stolen parts of the ancient scroll. Only one scroll remains protected, the scroll of light, which contains the ultimate defensive techniques called the breath of the mountain. But Kaito will come for it. Daniel learns that Kaito के साथ 3 elite fighters भी हैं, known as the Black Wind Trio. Each an undefeated expert in pressure point combat, shadow movement, weaponized karate. Basically guys ये लोग DLC level bosses हैं। Daniel को tough time देने वाले हैं। Daniel's training enters a new level. Miyagi says to defeat shadow you must master light. Training scene, balance of the wind. Daniel at cliff पर खड़ा होता है heavy winds के बीच में। He learns to feel the opponent's movement without seeing him. The breath of the mountain, slow breathing techniques to store energy and redirect force. Combat with blindfold. Daniel blindfold, sensing footsteps through vibration in the ground. On strike discipline is Miyagi teaches the ultimate defensive counter. Use opponent's full attack against himself. गाइस ये ट्रेनिंग मोन्टाज इज प्योर सिनेमा, गूज बम्स गारंटेड। एक रात मॉन्स्टेरी पर सडन अटैक होता है। काइतो एंड द ब्लैक विंड ट्रायो अराइव, अ मैसिव फाइट ब्रेक्स आउट, मियागी वर्सेस काइतो, डैनियल वर्सेस 2 members of the trio. Tanji protects the scroll. Daniel manages to defeat one of the fighters but gets injured. Miyagi and Kaito's duel is intense. Kaito uses speed so fast he looks like he is disappearing. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. Suddenly, Kaito throws sand in Miyagi's eyes. Dirty move. Daniel yells.
Miyagi, I am coming. But Tanji stops him. This is Miyagi's fight. Kaito escapes with 2 scroll pieces. He says, the boy will face me in 3 days at the Island of Shadows. Daniel, injured but determined, trains harder. He tells Miyagi, I am not ready. Miyagi replies, no one is ready for life. They become ready by choosing to stand. This line deserves an Oscar, guys. Pure wisdom. Miyagi teaches Daniel the final technique, a meditation stance that bursts into a fast, accurate counterattack using minimal movement. Daniel gains clarity. Karate is not about winning, it is about protecting what matters. It is about it. It is about bringing balance. Daniel, Miyagi, and Tanji reach the mysterious island, foggy, quite ancient. They see Cobra Kai banners everywhere. Kreese laughing, Kaito waiting on a stone platform. Kaito says, LaRusso, your master can't protect you now, face me. And guys, get ready, this is the craziest fight of the movie. Before reaching Kaito, Daniel must defeat the remaining trio members. First fighter uses pressure points. Daniel counters with Breath of the Mountain. Second uses rapid shadow strikes. Daniel defeats him blindfolded, sensing vibrations. Crowd, Cobra Kai students stunned. Now comes the final duel. Fog rolls in, silence everywhere. Daniel and Kaito face each other. Kaito attacks with lightning fast punches, all offensive, zero restraint. Daniel defends calmly using Miyagi's light techniques. Daniel gets hit hard a few times. He falls to knees, and Kreese laughs. Finish him, Kaito. But Daniel remembers Miyagi's word: stand. Even when standing seems impossible, he breathes deeply. Breath of the Mountain activated. Kaito attacks again. This time Daniel redirects his force perfectly. Kaito stumbles. Daniel shifts into the light within stance, and with one clean counter strike, a palm to the chest, he sends Kaito crashing to the ground. And silence. Guys, this movie is insane. ये मूवी सब में बहुत अच्छी है, द कराटे किड, और आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए। और इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत 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 अच्छे हैं, और ये मूवी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। है मूवीज़ में जॉन क्रीज कोबरा काय के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है। हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट हिम, डोजो ऑलमोस्ट बैंड, लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं। He finds someone dangerous, a mysterious karate grandmaster known as Sensei Kaito, a fighter whispered about as the Shadow of Okinawa. काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज़ करता है। क्रीज मेक्स अ डील विद हिम, हेल्प मी रिबिल्ड कोबरा काय एंड टुगेदर वी विल क्रश मियागी एंड हिज बॉय। एंड गाइस, यहीं से शुरू होती है रियल ट्रबल। ब्रेस योर सेल्फ। वन काम इवनिंग डैनियल एंड मियागी गार्डन में काम कर रहे होते हैं। सडनली अ लेटर अराइव्स फ्रॉम ओकिनावा, लेटर रिटन बाय अ मॉन्क नेम्ड मास्टर तांजी। मियागी का पुराना दोस्त होता है। तांजी उसको वार्न करता है, काइतो हैज़ रिटर्न्ड। ही सीक्स द एंशिएंट स्क्रोल्स, द मियागी सीक्रेट्स ऑफ लाइट एंड शेडोज। डैनियल कंफ्यूज्ड होता है। मियागी एक्सप्लेन्स कि सेंचुरीज पहले उनके एंसेस्टर्स ने कराटे के 2 सीक्रेट स्टाइल्स बनाए थे, लाइट स्टाइल फॉर डिफेंस, बैलेंस, हार्मोनी, shadow style for aggression, speed and destruction. Kaito belongs to the dark lineage and now he wants to master both styles. Daniel says, so what do we do? Miyagi replies, we go to Okinawa. And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa, a place filled with memories, honor and old traditions. Here they meet Master Tanji, an elderly monk with a sharp mind. Tanji tells them Kaito has already stolen parts of the ancient scroll. Only one scroll remains protected, the scroll of light.
which contains the ultimate defensive techniques called the Breath of the Mountain. But Kaito will come for it. Daniel learns that Kaito के साथ 3 allied fighters भी हैं, known as the Black Wind Trio, each an undefeated expert in pressure point combat, shadow movement, weaponized karate. बेसिकली गाइज ये लोग DLC लेवल बॉसेस हैं, डेनियल को टफ टाइम देने वाले हैं. Daniel's training enters a new level. Miyagi says to defeat Shadow, you must master light. Training scene, balance of the wind. Daniel at cliff पर खड़ा होता है, heavy winds के बीच में. He learns to feel the opponent's movement without seeing him. The breath of the mountain, slow breathing techniques to store energy and redirect force. Combat with blindfold. Daniel blindfold, sensing footsteps through vibration in the ground. On strike discipline is Miyagi teaches the ultimate defensive counter. Use opponent's full attack against himself. Guys, ये ट्रेनिंग montage is pure cinema. Goosebumps guaranteed. एक रात मॉन्स्टेरी पर सडन अटैक होता है. काइतो एंड द ब्लैक विंड ट्रायो अराइव. A massive fight breaks out. Miyagi versus Kaito. Daniel versus 2 members of the trio. Tanji protects the scroll. Daniel manages to defeat one of the fighters but gets injured. Miyagi and Kaito's duel is intense. Kaito uses speed so fast he looks like he is disappearing. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. Suddenly, Kaito throws sand in Miyagi's eyes. Dirty move. Daniel yells, Miyagi, I am coming. But Tanji stops him. This is Miyagi's fight. Kaito escapes with 2 scroll pieces. He says, the boy will face me in 3 days at the Island of Shadows. Daniel, injured but determined, trains harder. He tells Miyagi, I am not ready. Miyagi replies, no one is ready for life. They become ready by choosing to stand. This line deserves an Oscar, guys. Pure wisdom. Miyagi teaches Daniel the final technique, a meditation stance that bursts into a fast, accurate counterattack using minimal movement. Daniel gains clarity. Karate is not about winning, it is about protecting what matters. It is about bringing balance. Daniel, Miyagi and Tanji reach the mysterious island, foggy, quite ancient. They see Cobra Kai banners everywhere. Kreese laughing, Kaito waiting on a stone platform. Kaito says, LaRusso, your master can't protect you now, face me. And guys, get ready, this is the craziest fight of the movie. Before reaching Kaito, Daniel must defeat the remaining trio members. First fighter uses pressure points. Daniel counters with Breath of the Mountain. Second uses rapid shadow strikes. Daniel defeats him blindfolded, sensing vibrations. Crowd, Cobra Kai students stunned. Now comes the final duel. Fog rolls in, silence everywhere. Daniel and Kaito face each other. Kaito attacks with lightning fast punches, all offensive, zero restraint. Daniel defends calmly using Miyagi's light techniques. Daniel gets hit hard a few times. He falls to knees, and Kreese laughs. Finish him, Kaito. But Daniel remembers Miyagi's word, stand, even when standing seems impossible. He breathes deeply. Breath of the Mountain activated. Kaito attacks again. This time Daniel redirects his force perfectly. Kaito stumbles. Daniel shifts into the light within stance, and with one clean counter strike, a palm to the chest, he sends Kaito crashing to the ground. And silence. Guys, this movie is insane. ये मूवी सब में बहुत अच्छी है, द कराटे किड, और आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए. और इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, और ये मूवी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए. है मूवीज़ में जॉन क्रीज कोबरा काई के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है. His students left him, dojo almost banned.
लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं. He finds someone dangerous, a mysterious karate grandmaster known as Sensei Kaito, a fighter whispered about as the shadow of Okinawa. काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज करता है. क्रीज मेक्स अ डील विद हिम. हेल्प मी रिबिल्ड कोबरा काय एंड टुगेदर वी विल क्रश मियागी एंड हिज बॉय. एंड गाइस, यहीं से शुरू होती है रियल ट्रबल. ब्रेस योर सेल्फ. वन काम इवनिंग डैनियल एंड मियागी गार्डन में काम कर रहे होते हैं. सडनली अ लेटर अराइव्स फ्रॉम ओकिनावा. लेटर रिटन बाय अ monk नेम्ड मास्टर तांजी. मियागी का पुराना दोस्त होता है. तांजी उसको वार्न करता है काइतो हैज रिटर्न्ड. ही सीक्स द एंशिएंट स्क्रोल्स, द मियागी सीक्रेट्स ऑफ लाइट एंड शेडोज. डैनियल कंफ्यूज्ड होता है. मियागी एक्सप्लेन्स कि सेंचुरीज पहले उनके एंसेस्टर्स ने कराटे के 2 सीक्रेट स्टाइल्स बनाए थे. लाइट स्टाइल फॉर डिफेंस, बैलेंस, हार्मोनी. Shadow style for aggression, speed and destruction. Kaito belongs to the dark lineage and now he wants to master both styles. Daniel says, so what do we do? Miyagi replies, we go to Okinawa. And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa, a place filled with memories, honor and old traditions. Here they meet Master Tanji, an elderly monk with a sharp mind. Tanji tells them Kaito has already stolen parts of the ancient scroll. Only one scroll remains protected, the scroll of light, which contains the ultimate defensive techniques called the breath of the mountain. But Kaito will come for it. Daniel learns that Kaito के साथ 3 एलाइट फाइटर्स भी हैं known as the Black Wind Trio, each an undefeated expert in pressure point combat, shadow movement, weaponized karate. बेसिकली गाइज ये लोग DLC लेवल बॉसेस हैं. डेनियल को टफ टाइम देने वाले हैं. Daniel's training enters a new level. Miyagi says to defeat shadow you must master light. ट्रेनिंग सीन, बैलेंस ऑफ द विंड. डैनियल एक क्लिफ पर खड़ा होता है हैवी विंड्स के बीच में. ही लर्न्स टू फील द अपोनेंट्स मूवमेंट विदाउट सीइंग हिम. द ब्रीथ ऑफ द माउंटेन, स्लो ब्रीथिंग टेक्निक्स को टू स्टोर एनर्जी एंड रीडायरेक्ट फोर्स. कॉम्बैट विद ब्लाइंडफोल्ड. डैनियल ब्लाइंडफोल्ड, सेंसिंग footsteps through vibration in the ground. On strike discipline is Miyagi teaches the ultimate defensive counter. Use opponent's full attack against himself. Guys, ये ट्रेनिंग montage is pure cinema. Goosebumps guaranteed. एक रात मॉन्स्टेरी पर सडन अटैक होता है. काइतो एंड द ब्लैक विंड ट्रायो अराइव. A massive fight breaks out. Miyagi versus Kaito. Daniel versus 2 members of the trio. Tanji protects the scroll. Daniel manages to defeat one of the fighters but gets injured. Miyagi and Kaito's duel is intense. Kaito uses speed so fast he looks like he is disappearing. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. Suddenly, Kaito throws sand in Miyagi's eyes. Dirty move. Daniel yells, Miyagi, I am coming. But Tanji stops him. This is Miyagi's fight. Kaito escapes with 2 scroll pieces. He says, the boy will face me in 3 days at the Island of Shadows. Daniel, injured but determined, trains harder. He tells Miyagi, I am not ready. Miyagi replies, no one is ready for life. They become ready by choosing to stand. This line deserves an Oscar, guys. Pure wisdom. Miyagi teaches Daniel the final technique, a meditation stance that bursts into a fast, accurate counterattack using minimal movement. Daniel gains clarity. Karate is not about winning, it is about protecting what matters. It is about bringing balance. Daniel, Miyagi and Tanji reach the mysterious island, foggy, quite ancient. They see Cobra Kai banners everywhere.
Kreese laughing, Kaito waiting on a stone platform. Kaito says, Larusso, your master can't protect you now, face me. And guys, get ready, this is the craziest fight of the movie. Before reaching Kaito, Daniel must defeat the remaining trio members. First fighter uses pressure points. Daniel counters with Breath of the Mountain. Second uses rapid shadow strikes. Daniel defeats him blindfolded, sensing vibrations. Crowd, Cobra Kai students stunned. Now comes the final duel. Fog rolls in, silence everywhere. Daniel and Kaito face each other. Kaito attacks with lightning fast punches, all offensive, zero restraint. Daniel defends calmly using Miyagi's light techniques. Daniel gets hit hard a few times, he falls to knees, and Kreese laughs, finish him Kaito. But Daniel remembers Miyagi's word, stand, even when standing seems impossible. He breathes deeply, Breath of the Mountain activated. Kaito attacks again. This time Daniel redirects his force perfectly. Kaito stumbles. Daniel shifts into the light within stance, and with one clean counter strike, a palm to the chest, he sends Kaito crashing to the ground. And silence. Guys, this movie is insane. ये मूवी सब में बहुत अच्छी है, द कराटे किड, और आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए। और इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत 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 अच्छे हैं, और ये मूवी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। ती है मूवीज़ में जॉन क्रीज कोबरा काय के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है। हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट हिम, डोजो ऑलमोस्ट बैंड, लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं। ही फाइंड समवन डेंजरस, अ मिस्टीरियस कराटे ग्रैंड मास्टर known as Sensei Kaito, a fighter whispered about as the shadow of Okinawa. काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज करता है। क्रीज मेक्स अ डील विद हिम, हेल्प मी रिबिल्ड कोबरा काय एंड टुगेदर वी विल क्रश मियागी एंड हिज बॉय। एंड गाइस, यहीं से शुरू होती है रियल ट्रबल। ब्रेस योरसेल्फ। वन काम इवनिंग डैनियल एंड मियागी गार्डन में काम कर रहे होते हैं। सडनली अ लेटर अराइव्स फ्रॉम ओकिनावा, लेटर रिटन बाय अ मॉन्क नेम्ड मास्टर तांजी। मियागी का पुराना दोस्त होता है। तांजी उसको वार्न करता है, काइतो हैज़ रिटर्न्ड। ही सीक्स द एंशिएंट स्क्रोल्स, द मियागी सीक्रेट्स ऑफ लाइट एंड शेडोज। डैनियल कंफ्यूज्ड होता है। मियागी एक्सप्लेन्स कि सेंचुरीज पहले उनके एंसेस्टर्स ने कराटे के 2 सीक्रेट स्टाइल्स बनाए थे, लाइट स्टाइल फॉर डिफेंस, बैलेंस, हार्मोनी, शैडो स्टाइल फॉर एग्रेशन, स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन। काइतो बिलोंग्स टू द डार्क lineage and now he wants to master both styles. Daniel says, so what do we do? Miyagi replies, we go to Okinawa. And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa है मूवीज में। जॉन क्रीज कोबरा काय के रथलेस सेंसे टूर्नामेंट के बाद बैडली डिसग्रेस्ड हो चुका है। हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट हिम, डोजो ऑलमोस्ट बैंड, लेकिन वो चुप रहने वाला इंसान नहीं। He finds someone dangerous, a mysterious karate grandmaster known as Sensei Kaito, a fighter whispered about as the shadow of Okinawa. काइतो एक डेडली फाइटर होता है जो कराटे को एक वेपन की तरह यूज करता है। क्रीज मेक्स अ डील विद हिम, हेल्प मी रिबिल्ड कोबरा काय एंड टुगेदर वी विल क्रश मियागी एंड हिज बॉय। एंड गाइस, यहीं से शुरू होती है रियल ट्रबल। Brace yourself. One calm evening, Daniel and Miyagi garden में काम कर रहे होते हैं। Suddenly, a letter arrives from Okinawa. Letter written by a monk named Master Tanji. Miyagi का पुराना दोस्त होता है। तांजी उसको वार्न करता है, Kaito has returned. He seeks the ancient scrolls, the Miyagi secrets of light and shadows. डैनियल कंफ्यूज्ड होता है। मियागी एक्सप्लेन्स कि सेंचुरीज पहले उनके एंसेस्टर्स ने कराटे के 2 सीक्रेट स्टाइल्स बनाए थे,
Light style for defense, balance, harmony. Shadow style for aggression, speed, and destruction. Kaito belongs to the dark lineage. And now he wants to master both styles. Daniel says, "So what do we do?" Miyagi replies, "We go to Okinawa." And guys, welcome to the real start of Karate Kid 2 Legends. New country, new stakes, new enemies. Daniel and Miyagi reach Okinawa, a place filled with memories, honor, and old traditions. Here they meet Master Tanji, an elderly monk with a sharp mind. Tanji tells them Kaito has already stolen parts of the ancient scroll. Only one scroll remains protected, the Scroll of Light, which contains the ultimate defensive techniques called the Breath of the Mountain. But Kaito will come for it. Daniel learns that Kaito के साथ 3 allied fighters भी हैं, known as the Black Wind Trio, each an undefeated expert in pressure point combat, shadow movement, weaponized karate. बेसिकली गाइज ये लोग DLC लेवल बॉसेस हैं. डेनियल को टफ टाइम देने वाले हैं. डेनियल्स ट्रेनिंग एंटर्स अ न्यू लेवल. मियागी सेज टू डिफीट शैडो यू मस्ट मास्टर लाइट. ट्रेनिंग सीन, बैलेंस ऑफ द विंड. डेनियल एट क्लिफ पर खड़ा होता है हैवी विंड्स के बीच में. ही लर्न्स टू फील द अपोनेंट्स मूवमेंट विदाउट सीइंग हिम. द ब्रीथ ऑफ द माउंटेन, स्लो ब्रीथिंग टेक्निक्स को टू स्टोर एनर्जी एंड रीडायरेक्ट फोर्स. Combat with blindfold. Daniel blindfold, sensing footsteps through vibration in the ground. On strike discipline is Miyagi teaches the ultimate defensive counter. Use opponent's full attack against himself. Guys, ये ट्रेनिंग montage is pure cinema. Goosebumps guaranteed. एक रात मॉन्स्टेरी पर सडन अटैक होता है. काइतो एंड द ब्लैक विंड ट्रायो अराइव. A massive fight breaks out. Miyagi versus Kaito. Daniel versus 2 members of the trio. Tanji protects the scroll. Daniel manages to defeat one of the fighters but gets injured. Miyagi and Kaito's duel is intense. Kaito uses speed so fast he looks like he is disappearing. But Miyagi, calm as always, blocks everything with simple movements. Suddenly, Kaito throws sand in Miyagi's eyes. Dirty move. Daniel yells, "Miyagi, I am coming." But Tanji stops him. This is Miyagi's fight. Kaito escapes with 2 scroll pieces. He says, "The boy will face me in 3 days at the Island of Shadows." Daniel, injured but determined, trains harder. He tells Miyagi, "I am not ready." Miyagi replies, "No one is ready for life. They become ready by choosing to stand." This line deserves an Oscar, guys. Pure wisdom. Miyagi teaches Daniel the final technique, a meditation stance that bursts into a fast, accurate counterattack using minimal movement. Daniel gains clarity. Karate is not about winning, it is about protecting what matters. It is about bringing balance. Daniel, Miyagi, and Tanji reach the mysterious island. Foggy, quite ancient. They see Cobra Kai banners everywhere. Kreese laughing. Kaito waiting on a stone platform. Kaito says, "LaRusso, your master can't protect you now. Face me." And guys, get ready. This is the craziest fight of the movie. Before reaching Kaito, Daniel must defeat the remaining trio members. First fighter uses pressure points. Daniel counters with Breath of the Mountain. Second uses rapid shadow strikes. Daniel defeats him blindfolded, sensing vibrations. Crowd, Cobra Kai students stunned. Now comes the final duel. Fog rolls in. Silence everywhere. Daniel and Kaito face each other. Kaito attacks with lightning fast punches, all offensive, zero restraint. Daniel defends calmly using Miyagi's light techniques. Daniel gets hit hard a few times. He falls to knees, and Kreese laughs. Finish him, Kaito. But Daniel remembers Miyagi's word. Stand.
even when standing seems impossible. He breathes deeply, breath of the mountain activated. Kaito attacks again. This time Daniel redirects his force perfectly. Kaito stumbles. Daniel shifts into the light within stands, and with one clean counter strike, a palm to the chest, he sends Kaito crashing to the ground. And silence. गाइस दिस मूवी इज़ इंसेन। ये मूवी सब में बहुत अच्छी है, द कराटे किड, और आपको ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए। और इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत 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 अच्छे हैं, और ये मूवी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए।